So today I will make contour and highlighter stick, so keep watching my video. So highlighter stick बनाने के लिए we need coconut oil, glycerin, beeswax, shimmer, empty stick container. So आप कोई empty lipstick container भी ले सकते हैं। तो हाइलाइटर स्टिक बनाने के लिए सबसे पहले मैं beeswax को कट कर लूँगी और उसके बाद इसमें मैं 1 to 2 tablespoon कोकोनट ऑयल ऐड करूँगी। Now I will melt beeswax on double boiler. You can also melt on double boiler and also on microwave. So melt beeswax. तो beeswax मेल्ट हो गया है और ये बहुत जल्दी सॉलिडिफाई हो जाता है, इसलिए जल्दी जल्दी इंग्रेडिएंट्स ऐड करना होंगे। सो अब मैं इसमें नाउ आई विल ऐड ग्लिसरीन 2 drops and mix well. Now I will add loose shimmers in pink and silver shades. You can also add your favorite colors. So I will make a pink highlighter stick, light pink highlighter stick. So I will add 3 colors: silver, champagne and pink. सो मैंने beeswax को दोबारा मेल्ट किया है क्योंकि वो बहुत जल्दी सॉलिडिफाई हो गया था। सो अब मैं इसको एक एम्प्टी कंटेनर में पोर करूँगी। सो 10 से 15 मिनट में हाइलाइटर स्टिक बिल्कुल रेडी हो जाएगी। सो यू डोंट नीड टू पुट this in freezer or fridge because it will be solidified quickly. So आपको इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही जमना स्टार्ट हो जाएगा 1 से 2 मिनट में ही, और ये 10 से 15 मिनट में आपकी स्टिक रेडी हो जाएगी। सो उसी फॉर्मूले को फॉलो करते हुए मैं लाइट गोल्डन हाइलाइटर स्टिक बनाऊंगी, जिसमें मैं beeswax को मेल्ट करके 1 to 2 drops ग्लिसरीन ऐड किया है और ये बहुत जल्दी सॉलिडिफाई हो जाता है, इसलिए मैंने बहुत ही क्विकली इसमें हाइलाइटर ऐड किए हैं। हाइलाइटर एंड कंटूर स्टिक्स आर रेडी। और कंटूर स्टिक में जस्ट मैंने कोको पाउडर 1 टेबलस्पून ऐड किया था beeswax को मेल्ट करके, वही सेम फार्मूला, वही इंग्रेडिएंट्स, बस कोको पाउडर ऐड किया है एंड देन इसकी ये फॉर्म है, यू कैन सी दिस। नाउ आई विल शो यू द रिजल्ट्स एंड swatches.
I hope you like my video. If you like my video, so please don't forget to subscribe, like and share my video.